number 18 of C programming. So today we are going to learn something about how to write or read from a binary perspective. Uh, so for any program, we need fread and fwrite commands while reading a file or writing a file from the disk. Yesterday we saw about fprintf and fscanf. Today we will use fread and fwrite. So writing a binary file, while writing a binary file, we need to use fwrite command. This function takes following arguments. First is the address of the data where it should be written on the disk. Second is size of the data. What is the total size? Third is the number of such type of data. And finally, pointer where the file should want to write. So fwrite commands have this four arguments to be passed: address data, size data, numbers in data, and finally pointer to the file. Let's see this with one example how to use a fwrite command. So आपका प्रोग्राम शुरू होता है दो चीजों से, fread fwrite से stdio और standard lib को आपने include किया है. Then there is a structure defined with three nums, num1, n1, n2 and n3 whose data type is int. यहाँ तक पहला कोड का स्ट्रक्चर डेफिनेशन हुआ है और इसके पहले हमने stdio और standard lib को include किया है. Then we start with the main function. Then int n, again a new integer declared, struct 3num और उसमें num नाम का स्ट्रक्चर क्रिएट किया है. और फाइल स्टार fptr, ये हमने कल देखा है कि फाइल पॉइंटर मस्ट है whenever we are working with files. Next is if fptr is equal to fopen, पहले आप चेक करो कि programs.bin file और write binary is null तो नहीं रिटर्न कर रहा है. अगर null रिटर्न नहीं कर रहा है तो एरर ओपनिंग फाइल दे दो. अगर null रिटर्न नहीं हुआ इसका मतलब फाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो गई and then it won't go through this loop. Next is ये सिर्फ तभी होता है जब आप विंडोज फोल्डर या राइट प्रोटेक्टेड फोल्डर में आपकी बिन फाइल क्रिएट करने की कोशिश करते हो या फिर कोई एंटीवायरस जो आपके प्रोग्राम से बिन फाइल क्रिएट नहीं होने देता, क्योंकि वायरस को क्या लगता है ये फाइल जो है दैट इज नथिंग बट अ वायरस प्रोग्राम जनरेटिंग मोर फाइल्स एंड फिलिंग अप द मेमोरी. सो दैट्स व्हाई ये नल रिटर्न हुआ तो एरर हमने रिप्रोड्यूस कर दिया. तो यहाँ तक कोड सेम है जो हमने यस्टरडे लिखा है या सीखा है. नाउ for n equal to 1, n less than 5 plus n. Okay, now we are going to start with num.n1. हम n1 में पहले n का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. then num.n2 5 into n. so हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं n को और उसको n2 में स्टोर कर रहे हैं. तो जब n1 होगा तो ये n2 होगा 5 और n3 हो जाएगा 5n plus 1. okay, so that will be 5 plus 1 6. so n1 1, n2 5, n3 6. now here you have to understand fwrite में हमने and num करके पास किया है, comma size of struct 3 num, that is what we declared earlier, comma 1. now this 1 indicates basically how many numbers you want to write, and then finally fptr is the file pointer where the data should be taken from, and then return 0. so this program will create a new program file .program.bin in C drive. the declared structure 3num with numbers n1, n2, n3 are defined in it, and main function as a num. now in the loop we store the value of the file using fwrite command. The first parameter takes the address of the num and the second parameter takes the size of the structure num. okay, so it's the size of the structure and not your individual numbers. Since we are inserting only one instance of num, the third parameter is 1 and the last parameter is file pointer, which points at the file that we are storing in the data, and finally we close the file. आप ये प्रोग्राम लिख के बताओगे कि क्या आंसर आता है आज. नेक्स्ट थिंग इज रीडिंग फ्रॉम द बाइनरी फाइल. सो फंक्शन fread यूज करते हैं, इसको भी सेम 4 आर्ग्यूमेंट लगते हैं सिमिलर टू fwrite, एंड these 4 आर्ग्यूमेंट्स आर address data, size data,
numbers data and pointer to the find. तो बेसिकली आपको पहले कहाँ लिखना है, कितने नंबर लिखने हैं और कहाँ से लिखना है, इस तरह से आपको देना होता है। और साइज ऑफ द डेटा मतलब कितना बड़ा डेटा लिखना है। तो पहले आप देखोगे कि यहाँ पे हमने कहाँ लिखना है वो मेंशन किया। सो एम्परसैंड नम इज द एड्रेस ऑफ द नम। देन कितना लिखना है वो हमने मेंशन किया, साइज ऑफ स्ट्रक्ट 3 नम। फिर कितने इंस्टेंस मतलब कितनी बार लिखना है वो हमने मेंशन किया। एंड देन फाइनली कहाँ से लिखना है वो हमने मेंशन किया। सो ये कोड बहुत सिमिलर टू द अर्लियर कोड है। यहाँ पे देखोगे stdio.h और standardlib.h इंक्लूड किए। स्टैंडर्ड लिब इसलिए इंक्लूड किए क्योंकि स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर 3 नम, अगेन n1 n2 n3 तीन नंबर डिफाइन किए। फिर इंट मेन, इंट नम, स्ट्रक्चर 3 नम नम, फाइल पॉइंटर को हमने फाइल किया। हमेशा याद रखो ये FIL कैपिटल लिखना, फिर स्टार FPTR, ये काइंड ऑफ अ स्टैंडर्ड है सी प्रोग्राम में। आप इसको चेंज कर सकते हो पर मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वेरिएबल नेम फाइल पॉइंटर से बहुत इजीली पता चल जाता है कि ये फाइल पॉइंटर यूज हुआ है यहाँ पे। देन अगेन यू कैन चेक FPTR इज इक्वल टू वो नल वाला कंडीशन। उसके बाद एरर ओपनिंग फाइल आएगा printf से एंड देन exit 1। अब कभी कभी हम exit 0 लिखते हैं और exit 1 लिखते हैं, तो आप मुझे बताओगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, because we are putting our main function as returning function of an integer. Okay, so when we say void and when we say int, there should be a difference between the two, which we can observe now. Instead of writing exit 0 we are writing exit 1। कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे कल मैंने नोट शेयर किया, उसमें गेट ch भी यूज करते हैं, where the it will hold the program till you press any key onto your keyboard। तो गेट ch ये भी एक तरीका है प्रोग्राम को एंड करने का। पर हम अब तक जितना भी प्रोग्रामिंग सीखे उसमें हम रिटर्न 0 से प्रोग्राम एंड करते हैं। Then next thing is for n equal to 1, n less than 5 plus n, then you say fread। Now we are reading the file। तो अगर वो फाइल वहां पे होगी नहीं तो ये RB ऑपरेशन नल फेस कर देगा। याद करो पिछली बार हमने WB लिखा है, तो लास्ट टाइम का कोड और ये कोड में सिर्फ यहाँ पे fread हुआ है, f राइट की जगह, और WB की जगह RB हुआ है, अदरवाइज द कोड इज सेम। और एक लास्ट लाइन ऐड हुई है कि हमने जो भी राइट किया है वो अभी हम डिस्प्ले कर सके। तो printf n1, फिर एक %d मतलब फिल इन द ब्लैंक डाला है, /t मतलब टैब दिया है, फिर n2 कोलन %d वापस फिल इन द ब्लैंक /t, n3 %d स्लैश फिल इन द ब्लैंक /t। और जो आंसर स्टोर होगा, जो रिटर्न हुआ है अपने को, वो नम वेरिएबल में स्टोर होने वाला है। तो num.n1 में उसका फर्स्ट इंस्टेंट होगा, num.n2 में उसका सेकंड, और num.n3 में उसका थर्ड वेरिएबल स्टोर होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू fclose FPTR, ऑलवेज डू दिस व्हेनेवर यू यूज अ पॉइंटर, क्योंकि आपने फाइल से रीड किया है, इफ यू डोंट क्लोज वो फाइल नॉन डिलीटेबल नॉन डिस्ट्रॉयबल हो जाएगी, और जब तक आप PC रिस्टार्ट नहीं करते वो फाइल डिलीट भी नहीं होगी। तो आप fclose लिखना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर fclose लिखना भूल गए तो आप नेक्स्ट टाइम fread या fopen ऑपरेशन भी उस पर कॉल नहीं कर पाओगे। So remember, this is a major mistake that engineers do. They have to close the file that they have opened, then finally return 0. So in this program we read the same file program.bin what we have created last time and loop through the records one by one. In this simple terms, once we read the 3 number record, the size of the file pointer by *FPTR is updated for num. Now next command we are going to learn is called fseek. So fseek command जो है, basically if you have many records inside a file and we want to access a specific position, then we need to loop through the records before you actually get the record. So this will waste lot of memory and operation time. The easier way to get this particular data record is you can use fseek. As the name suggests, fseek seeks for the cursor to the given record in the file. It's like a search operation. So syntax इसका कैसा होता है? fseek file pointer stream जो भी है file star stream long int offset int whence.
So the first parameter of the stream of pointer to the file, the second parameter is the position of the record where the file is to be found, and third parameter specifies the location where the offset starts. So for example, so what is the difference between fseek? When seek सेट जब हम सेट करते हैं वेंस की जगह, हाँ, इसका मीनिंग क्या होता है कि स्टार्ट द ऑफसेट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल. तो आपको अगर पता है कि फाइल के शुरुआत से वो 0 नंबर नहीं है उसमें, तो यू कैन सेट अ पॉइंट कि आफ्टर 150th एंट्री यू स्टार्ट सर्चिंग. सीकेंड, सो बेसिकली इट विल टेल यू कि लास्ट के ये 4-5 बाइट में वो नहीं होगा फाइल का लोकेशन, तो यू कैन इग्नोर देम यूजिंग सेटिंग ऑफ सीकेंड. देन सीक कर्सर, basically it starts the offset of the current location from the cursor in the file. Now let's take an example so that it will be more clear for fseek. Again, you start with stdio.h and standard lib. Define a structure 3num where you define n1, n2, n3, and that's it. Then your main program starts. You define intn struct 3num num file star fptr. Again, same thing, you throw an error if that file program.bin rb throws an error because we are reading through this file. Then error opening file de do printf and then give exit one command. Else, now we go to the actual fseek command. fseek में पहले हमने fptr पास किया जो कि मेरे फाइल का पॉइंटर है. Then minus size of struct num3. तो बेसिकली यहाँ पे मैंने बताया कि मेरा स्ट्रक्ट नम का जो भी साइज है वो टोटल स्टेप साइज होगी fseek की. एंड देन सीकेंड, तो सीकेंड मतलब वो लास्ट पोजीशन तक जाके सर्च करेगा. नाउ फॉर n इक्वल टू 1, n लेस देन 5, n प्लस प्लस. f रीड, तो 1 by 1 वो रीड करते जाएगा साइज ऑफ स्ट्रक्ट 3num 1, fptr, एंड देन these 3 numbers are displayed. And then you close the fptr and return the 0. So this is again a program we have to try out, and we will see what is the answer of that particular code. Now C file handling example. So C program to read the name and the marks of n number of students which are stored into a file. So this is a actual file handling program. अब तक हम सिर्फ प्रोग्राम में फाइल रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं वो सीख रहे थे. अब हम इसका एक एप्लीकेशन देखेंगे कि आपके पास एक बहुत बड़ा टेक्स्ट फाइल है और उसमें आपको नाम और मार्क्स रीड करने हैं फॉर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टोर्ड फाइल. सो हियर इज द प्रोग्राम. फर्स्ट इज इंक्लूड stdio.h. जब हम स्ट्रक्चर इंक्लूड नहीं कर रहे तो स्टैंडर्ड लिब की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने इंसर्ट नहीं किया. मैं हमेशा इंसिस्ट करता हूं कि आप पांचों लाइब्रेरीज इंपोर्ट करके रखो. देन इंट मेन, योर मेन प्रोग्राम स्टार्ट्स. कैर नेम्स, तो 50 नाम के लिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया. मतलब इसमें हर एक स्टूडेंट का नाम अप टू 50 कैरेक्टर्स जा सकता है. तो कैर नेम मतलब सुब्रमण्यम स्वामी, इस तरह से 50 कैरेक्टर तक कोई भी नाम उसमें जा सकता है. Then marks, I and num are the other 3 variables. We will see where they are used in the program. First we will start with enter number of students. तो हमने यूजर को पूछा भाई कितने स्टूडेंट है तू बता. scanf %d ampersand num, उसने बताया कि लेट्स से 5 स्टूडेंट्स है, तो वो 5 num में स्टोर हो गया. ओके. देन एक फाइल पॉइंटर हमने ओपन किया, फाइल स्टार fptr. fptr is equal to f open c drive student.txt comma w कमांड. अगर वहां से नल रिटर्न होता है मतलब वो फाइल नहीं है तो प्रिंट एरर, क्योंकि उसके आगे का ऑपरेशन करने का कोई मतलब नहीं है. अगर नल रिटर्न नहीं होता वो फाइल खुल जाती है. तो देन यू गो फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन num, i प्लस प्लस. अब ये वो i है जो हमने पहले डिक्लेयर करके रखा था. कुछ लोग यहाँ पे इंट i इक्वल टू 0 लिखते हैं, वो भी चलता है सी प्रोग्रामिंग को. देन printf फॉर students %d, that is for student 1, for student 2, for student 3 and so on. Enter name i plus 1. Scanf the name, so we enter the name of the students. Then enter marks, we will scan the marks into name and mark, and then use fprintf जो हमने कल सीखा था
उसको क्या पास करना होगा, fptr देन स्लैश नेम %s स्लैश n marks %d and then you write name and marks. So remember, fprintf is very similar to your regular printf where we want to display something is written in double quotes and what is to be displayed is written afterwards without ampersand sign. But only new thing is यहाँ पे एक f आ जाता है. तो कल किसी स्टूडेंट ने अपने यहाँ गलती की थी कि f प्रिंट लिखा था. ऐसे नहीं होता है, printf ही स्ट्रक्चर का कमांड है, f सिर्फ आगे लग जाता है बिकॉज इट्स अ फाइल ऑपरेशन. सो f printf लिखना है एंड देन fptr लिखना है. तो ये दो चीजें एक्स्ट्रा लगाओगे f और fptr तो वो कमांड printf जैसा ही काम करेगा. Then you close the pointer and return 0. Next is so we have written the students marks for n number of students. Now we have to read the name and marks of the students and store them into the file. So previously if that file exists then you can add the information into the existing file, otherwise we can create a new file. So ये कमांड में हम लोग क्या कर रहे हैं, stdr.h main names यहाँ तक सेम कोड है, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यूजर से पूछा है, फाइल पॉइंटर सेट किया, f ओपन कॉल किया, स्टूडेंट डॉट टेक्स्ट को अगर नल रिटर्न आए तो एरर प्रिंट किया, एग्जिट कर दिया. ये चीज जो है ये आपने देखा होगा कि फाइल हैंडलिंग के जितने भी प्रोग्राम है सब में कॉमन है. उसके बाद फॉर आई गोइंग फ्रॉम 0, आई 0 से शुरू हो रहा है और आई लेस देन नम है, ये i प्लस प्लस या i इक्वल टू i प्लस 1 या i प्लस प्लस i कोई भी एक तरह से लिखो. लास्ट जो टर्मिनल कंडीशन होती है वो फॉर लूप कहाँ हर एक इटरेशन में क्या करेगा वो होती है. द सेकंड कंडीशन होती है वो फॉर लूप कैसे बंद होगा उसके लिए होती है, और फर्स्ट कंडीशन जो होगी वो फॉर लूप कहाँ से शुरू होगा उसके लिए होती है. तो यहाँ पे वो 0 से चालू कर रहा है इसलिए लेस देन नम लिखा है, अगर 1 से चालू करते तो उसको लेस देन इक्वल टू नम तक रन करना पड़ता. नेक्स्ट इज printf फॉर स्टूडेंट्स एंटर द नंबर, i प्लस 1 पे सीधा स्टोर करते जाओ. देन scanf %s name, सो यहाँ पे जो भी है उसको नेम में स्टोर किया हमने. यहाँ पे देखो एम्फेसेंड देने की जरूरत नहीं पड़ी, तो आप याद रखो %s के साथ कभी एम्फेसेंड देने की जरूरत नहीं होती, और जो नेम है इट शुड बी एन अरे. ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट इज एंटर मार्क्स. मार्क्स तो सिंपल इंटीजर जैसा है तो उसको एम्फेसेंड देना पड़ेगा and you can store that marks into that particular value. As soon as you get that, you store it into the file. यहाँ पे देखो मार्क्स जो है वो हर लूप के इटरेशन में ओवरराइट होते जा रहा है, सिमिलरली नेम. तो इस लूप का एडवांटेज क्या है कि हर एक नेम और मार्क्स को अलग अलग मेमोरी क्रिएट करने की जगह वो बस फाइल में लिखते जा रहा है और उतने ही मेमोरी में it is working. Okay, then you close the file pointer and return 0. So advantage of using files is you don't have to create, let's say 100 student है तो 100 variables. You can use only 2 variables, name and marks, और name variable जो है वो फाइल में लिखते जाओ, marks variable फाइल में लिखते जाओ, और जैसे ही आपका राइटिंग खत्म हो जाए you can just rewrite the existing name and marks because जो फाइल में लिख गया है वो ऑलरेडी स्टोर हो चुका है. Now next is write a C program for all members in an array structured using fwrite command and read the array from the file to display it onto the screen. Okay, तो यहाँ पे अभी एक नया प्रोग्राम है. लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिफाइन करना है, उसका नाम है स्टूडेंट, और उसमें कैरेक्टर मतलब स्टूडेंट का नाम 50 कैरेक्टर तक लंबा हो सकता है और उसका हाइट इज द सेकेंड पैरामीटर. नाउ मेन लूप चालू होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर stud1 stud2 दो स्टूडेंट को हमने इंट्रोड्यूस किया है विच आर 2 स्ट्रक्चर stud1 एंड stud2. ब्रैकेट में 5 लिख के रखा है सो दैट वी कैन रीयूज इट फॉर 5 टाइम्स. सो बेसिकली 5 स्ट्रक्चर डिफाइन हो गए हैं इसके अंदर. और स्ट्रक्चर डेफिनेशन का मेन एडवांटेज ये है कि अपने को ये नेम और हाइट अपने आप 5 बार डिक्लेयर हो चुका है और 5 + 5 टोटल 10 स्ट्रक्चर्स है इसमें. देन फाइल पॉइंटर ये हमने हमेशा लिखना है, और फिर उसके बाद इंट i इक्वल टू नया i करके डिक्लेयर किया है. देन f ओपन, यहाँ पे wb कमांड दिया है, यहाँ पे एरर चेक नहीं किया है हमने, जबकि हमेशा करना चाहिए. जैसे मैं बोलता हूँ कि हमेशा 5 लाइब्रेरीज इंक्लूड करो, वैसे वो नल वाला जो है
वो फाइल पॉइंटर के ऑपरेशन के बाद तुरंत कॉल कर दो, ताकि अगर वो फाइल एग्जिस्ट ना करती हो या कुछ एरर है तो आपका प्रोग्राम आगे ही ना बढ़े। तो यहाँ पे वो नहीं लिखा है, बट आई वुड इंसिस्ट दैट यू राइट इट व्हेन यू डू इट। नेक्स्ट इज फॉर आई गोइंग फ्रॉम 0 आई लेस देन 5 प्लस प्लस आई। एफ फ्लश, ये कमांड अभी तक हमने यूज नहीं की है। बेसिकली ये स्टैंडर्ड इनपुट के लिए यूज होती है कमांड। यहाँ पे आप प्रिंटफ में जो भी यूजर को इनपुट दोगे उसको आप सीधा गेट एस से उस पर्टिकुलर फाइल नेम में एब्सॉर्ब कर सकते हो। देन एंटर हाइट, उसके बाद वापस जो भी स्टूड1 की हाइट है वो आई बढ़ते जाएगा, वैसे स्टूड1 में सारी एंट्रीज होती जाएंगी। देन वंस इट इज डन, आपको fwrite कमांड कॉल करना है stud1 इस अरे पे। then size of stud1 which should be 5 in this case. Then how many instances? Only one instance, and from where to take the data will be fptr. Then you close your fptr. Next is, now we know that file.txt has all this info. We have written the info in the earlier code, so now we will read it from there. So fptr is equal to f open, वापस file.txt rb। तो ये f open जो है ये लिखा है, ये पहले वाली फाइल हमने क्लोज कर दी थी और अभी नई फाइल को ओपन कर रहे हैं, लेकिन रीड मोड में। नेक्स्ट इज fread stud2 size of stud2 comma 1 comma fptr for I going from 0 I less than 5 I plus plus. Now this time what we will do is printf %s/9 stud I dot name stud2 dot height and then you just print it. So यहाँ पे एक कमांड लास्ट में यहाँ नीचे दिख नहीं रही है, that should be your, जैसे fwrite हुआ है वैसे ही fread होगा। stud2 से आप उसको रीड कर रहे हो, अच्छा यहाँ पे है वो, हाँ मिल गया। So यहाँ पे आप उसको रीड कर रहे हो और उसको fptr में स्टोर कर रहे हो। So once you do that, you can close the file pointer, and this is how you can read and write from the file. Now, what we are learned up to now, it's about the file handling. Now we will see what is C enums. Okay, so numerations कैसे करते हैं using C. So in C programming, the enumeration type is also called as enums. Is the data type consisting of a integral constant to define enum as a keyword. जैसे हमने अभी तक int देखा है, डबल देखा है, कैर देखा है, स्ट्रिंग देखा है, उसी तरह से enum भी एक तरह का डेटा टाइप होता है। enum flag const1 const2 up to constant. By default const1 is 0, const2 is 1 and so on. You can change the default value by enum during the element declaration if required. For example, changing the value of enum constant something like this. Enum suit, okay, उसके अंदर club 0, diamonds 10, hearts 20, spades 3, okay, इस तरह से आप initially उसको define कर सकते हो। Now, enumerated type declaration का advantage क्या होता है? When you define a enum type, the blueprint of the variable is already created. Here is, you can create a variable with enum types. For example, enum boolean false true, enum boolean check, declaring an enum variable. Here the variable check will be of type boolean, will be get created, okay, and you can also declare enum variable like this, enum boolean false true check. ये दो तरह से डिक्लेरेशन की जाती है। जो कर्ली ब्रैकेट में है वो उसके पॉसिबल आउटकम्स है। तो अब ये चेक वेरिएबल जो है वो सिर्फ ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, तो ये बुलियन टाइप का ऑब्जेक्ट बन गया। लेट्स टेक एन एग्जांपल सो दैट enumeration is very clear to you. For example, this is a simple program, stdio.h हमने लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड की। देन enum week, वीक के डेज फिक्स होते हैं, तो enum कहाँ यूज कर सकते हो आप? जहां जहां आपको फिक्स चीजें पता है, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। These are the days which will be there inside a week. Okay, so I have declared them. These are the possible outcomes of this particular enum week. Okay, then int main, उसमें अभी enum का टाइप हमने डिक्लेयर कर दिया है, उसके पॉसिबल वैल्यूज डिक्लेयर कर दिए, तो वी एक्चुअली डिफाइन अ टुडे एज अ वेरिएबल। जैसे ये int डिफाइन करते हैं वैसे हमने enum today डिक्लेयर किया है। इसका एडवांटेज क्या है कि टुडे कैन ओनली टेक द वैल्यूज विच आर देयर
associated inside week. Okay. Now then I can assign today is equal to Wednesday, which was one of the valid assignments. Then %d printf %d today plus 1. अब क्या होगा? Today plus 1 will be day 4. Okay, so that will get displayed and return 0. So output will be day 4. Now why day 4? See, this is day 0, day 1, day 2, day 3, and Thursday will be day 4. So today plus 1. तो आप इससे कैलेंडर बना सकते हो, और भी कई चीजें हो सकती है, पर बेसिकली इनम टाइप जहाँ पे आपको फिक्स डिक्लेरेशन में घूमना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप डेज भी लिख सकते हो, पर उसमें फिर आपको कैलेंडर ईयर इवन ऑड और फोर्थ एवरी फोर्थ ईयर विल बी 365 डेज, ये सब प्रॉब्लम आते हैं। तो जहां जहां फिक्स चीजें नहीं है, जैसे बाइनरी हमेशा ट्रू और फॉल्स ही होगा, या वीक का डे हमेशा मंडे टू संडे के बीच में ही आएगा, उस तरह से जहां जहां फिक्स चीजें हैं वहां पे आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग कॉन्स्ट और वेरिएबल स्पेस जिसको एडिट किया जा सकता है, यू कैन यूज enum. Now where the enums are used, enum variable can take only one value. Here is one example to demonstrate it. यहाँ पे हमने क्या किया है कि enum सूट करके डिफाइन किया है, जिसमें क्लब 0 है, डायमंड 10 है, हार्ट 20 एंड स्पेड 3 है, और हमने कार्ड डिक्लेयर कर दिया। अब ये कार्ड इंटरनली मेन के अंदर भी डिक्लेयर कर सकते थे। दिस इज अ सिमिलर वे यू डिक्लेयर आउटसाइड द मेन लूप, so it's a global variable now. Now int main card equal to club, so you have assigned the card value as a club. Then print the size of enum variable %d in bytes, and then you say size of the card and return 0. So यहाँ पे size of the card जो है वो 4 bytes आएगा, because we are getting 4 because of the size of int is 4. Now club जो है वो int type का है, that's why we are getting 4. So this makes a good choice to make a flag using enums. Now what is the enum flags? Let's take an example here. Let's say enum design flags. Then I say italics के लिए flag number 1 होगा, bold के लिए flag number 2 होगा, underline के लिए flag number 4 होगा, and then I click a button. So suppose we are designing a button for a Windows application, and when you say italics or bold or underline, it should have its corresponding effect on the text. So there is a reason why integral constants are power of 2 in the above pseudo codes. For example, italic का बाइनरी क्या हो जाएगा? 00000001. बोल्ड का बाइनरी हो जाएगा 00000010, और अंडरलाइन का बाइनरी हो जाएगा 00000100। अब किसी को याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये बाइनरी जो नंबर है वो हमेशा लास्ट डिजिट जो है वो 010101 चलता है, उसके पहले वाला डिजिट 001111 करके चलता है। तो बेसिकली आप कल जो नोट शेयर किए उसके चैप्टर 1 में भी देख सकते हो कि नंबर्स का बाइनरी कैसे निकालते हैं। For the new students, I have already taught this topic, I guess in lecture number 13. You can refer that also. So since the integral constants are power of the 2, you can combine 2 or more flags in one go without overlapping and bitwise OR operation. This will allow you to choose more than one flag at once. For example, यहाँ पे प्रोग्राम में हमने क्या लिखा है? stdio.h enum design flags bold 1 italic 2 underline 4, ठीक है। फिर हमने क्या किया? int main, यहाँ पे int my design, मुझे बोल्ड और अंडरलाइन दोनों चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे बोल्ड और अंडरलाइन को कंबाइन किया जाएगा, मतलब ये 1 रहेगा, ये सेकंड 0 रहेगा, थर्ड 1 रहेगा, ठीक है। देन printf %d my design जो क्या कहता है? बोल्ड और अंडरलाइन का और ऑपरेशन, so you print that and that should be 5. अब आप बेसिकली देखोगे और ऑपरेशन इज नथिंग बट एडिशन, तो बोल्ड और अंडरलाइन अगर साथ में किया है किसी ने तो इट शुड रिटर्न यू 5, ठीक है। अगर बोल्ड और इटैलिक्स होता तो आंसर 6 आता, बोल्ड इटैलिक्स और अंडरलाइन तीनों होता तो आंसर 7 आता। तो आप अब आपके प्रोग्राम को इजीली पता है कि आपके टेक्स्ट पे क्या ऑपरेशन करना है बाय नोइंग द आउटपुट। तो माय डिजाइन अगर 5 रिटर्न करता है, इसका एक ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि बोल्ड और अंडरलाइन सिलेक्ट हुए हैं। अगर माय डिजाइन 2 रिटर्न करता है तो उसका एक ही मतलब है कि मेरा टेक्स्ट जो है वो इटैलिक्स में होना है।
Now you can add the address according to your experiment. So for example, if my design and italics, then code for italics you can write. Here we have added the italics to our own design. Note that only the code for italics is written inside the if statement. You can also accomplish most of the things in C programming without using enumerations. However, they are pretty handy in certain situations. Now, preprocessor and macros, ये एक टॉपिक चैप्टर 1 से हमने छोड़ दिया था. So let's understand what is a preprocessor. Now हमने hash include और hash define ये हमने already बहुत बार यूज किया है. तो बेसिकली सी सोर्स कोड या सी फाइल जो है वो जाती है पहले प्री प्रोसेसर को, देन इट गोज टू द कंपाइलर. So preprocessor is a micro preprocessor that allows you to define the macros that transforms your program before you can compile it. So these transformations can be inclusion of a header file, macro expansions, etc. For pre-processing directives, we always use star symbol, hash symbol. For example, hash define pi 3.14. हम ऑलरेडी 5 लाइब्रेरी फाइल जो है वो इंक्लूड करते हैं. इसका मतलब क्या होता है, प्री प्रोसेसर में वो सारे फाइल का सी प्रोग्राम जो है वो कॉपी हो जाता है अपने फाइल में. ओके, सो दिस इज व्हाट दिस हैश मींस. तो आपने अगर खुद का कोई प्रोग्राम लिख दिया और आपको उसकी लाइब्रेरी बनानी है, so you can include that C program using hash include and then give your file name. Now, include header file, what we call hash include, is a preprocessor used for including the header files to the C program. For example, include stdio.h. Here stdio.h is a header file and hash include preprocessor directive will replace the above line with the constants of stdio.h header file. That's the reason we always use hash include at the before functions so that we can directly use printf, scanf and other functions. You can also create your own header files. हाँ, उसको बस .h करके सेव करना है. And function declaration including in your program. For example, a user defined preprocessor directive will be hash include my header.h. आपको ये अभी ज्यादा जरूरी नहीं पड़ता, पर आप जब बहुत बड़े लेवल के कोडर बन जाओगे तो आपके लिखे हुए सी प्रोग्राम लोगों को डायरेक्ट यूज करने के लिए देना है. यू डोंट वांट टू waste their time, so you create your own header files and ask user to just include that file into his program. Macros are defined using hash define. So macro is a fragment of the code with hash define, and you can define a macro in C program by typing hash define preprocessing directive. So here is the example where we define hash define C is equal to 299799245, which is the speed of the light. So whenever in the program I write C, it will get replaced by this number, which is the speed of the light. हम लोग अभी तक 12th स्टैंडर्ड में को 3 into 10 raised to 8 ही बोलते थे, but that was the actual number. Now here is one example using hash defined preprocessor. यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एरिया ऑफ द सर्कल के लिए कोड लिखा है. यहाँ पे यूजर रेडियस डालेगा और उसको एरिया ऑफ द सर्कल मिल जाएगा. आपको अगर फॉर्मूला याद है तो वो होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई इंटू आर इंटू आर. तो लेट्स अंडरस्टैंड ये प्रोग्राम यूजिंग हैश डिफाइन कैसे इसको अकम्प्लिश करते हैं. फर्स्ट थिंग इज hash include stdio.h, hash include hash define pi 3.1415. ठीक है, ये आगे और डिजिट तक एक्यूरेसी भी आप दे सकते हो उसको. देन int main float radius area, printf enter the radius, scanf %f radius. Then area equal to pi into radius, then printf area is equal to %.2f area, and then you return 0. Now functions which looks like a macro, let us understand how we can call them. So we can define a macros that work in a similar way to a function call. This is known as function like macros. For example, define circle area bracket r and then pass a formula 3.415 into r. So every time the program encounters circle area and argument, it will be replaced by 3.145 into argument. And let's take an example. Suppose we want pass 5 as an argument, then it will read that circle area 5 expands to 3.145 star into 5 into 5. So basically 5 का
सर्कल एरिया निकालना है. So this will be a easy and simpler way to write the same program in just one line using a macro. Second is how we can define our own preprocessor. Here is the example. हम सेम रेडियस जो है वो पहले भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो include stdio.h has defined pi and then use this pi into a user defined preprocessor where we define circle area r, which is equal to pi into r into r. Then we go to the main program. We define radius and area. You ask user to enter the radius. Then you read that radius value in percentage f and then directly write area equal to, हाँ यहाँ पे ये user defined function है, circle area bracket radius, that's it. Whatever you have passing will get multiplied with accordingly, and then finally you will get an area at the output. Now let us understand conditional compilations in the next lecture. Today we will stop here and continue in next time.